हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का माई इंग्लिश बुक 7 3.4। प्लीज डोंट रीड दिस पोयम। इस लेसन के मार्जिनल क्वेश्चन प्लस इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स। So first है, have you even been told not to do certain things? Do you stop doing that immediately or do you continue to do same anyway? आपको अगर किसी ने बोला ये करना नहीं है तो आप उसको इमिडिएटली स्टॉप कर देते हो या वैसे ही कंटिन्यू स्टार्ट रखते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ योर डोंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 5। डिस्कस द लिस्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। डिस्कस करके आपको टेबल कंप्लीट कर लेना है। सो लिस्ट ऑफ डोंट्स, स्टॉपिंग डूइंग इट, ट्राइड इट, डिड इट एनीवे। ओके, क्या करोगे आप, ये राइट डाउन कर लेना है। डोंट टॉक लाई, ये आप करना छोड़ दोगे। स्टॉप डूइंग इट, यस। डोंट रश इनटू इट, यस। डोंट ईट जंक फूड, ट्राइड इट। ओके, ये इमिडिएटली स्टॉप नहीं कर सकते कि ये ट्राई करने वाला है। डोंट बी एग्रेसिव, स्टॉपिंग डूइंग इट। ओके, अलाउ अदर टू स्पीक, स्टॉप डूइंग इट। डोंट वॉच टीवी ऑल टाइम। इसकी टिक कहाँ पे आएगी आपको चूज करके स्टॉप डूइंग इट और ट्राइड इट में लगा देनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, when you write something or paint something or make something, do you want others to see it? Discuss the reason for your answer. So ये है आंसर। इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्रेजेंट एनी टू स्टैंजास ऑफ द पोयम यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। प्रॉपर इंटोनेशन के साथ आपको 2 स्टैंजा पोयम की कम से कम प्रेजेंट करनी है। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज इन ईच स्टैंजा। सभी स्टैंजा में राइमिंग वर्ड जहाँ पे है आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट डाउन कर लेने हैं। सो देखो, मी, सी, प्ले, अवे, नाइस, ट्वाइस, लाइन, माइन, स्टॉप, कॉफ, जेल, फेल, मिस्ड, एग्जिस्ट, फन, डन, डू, टू। क्वेश्चन नंबर 3, थिंक एंड आंसर। The poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? That someone is everybody who read the poem. B question, what did you feel when you read the line, please don't read this poem? जब आपने पोयम की प्लीज डोंट रीड दिस पोयम ये लाइन रीड की तब आपको क्या फील हुआ? आंसर, आई फील टेम्प्टेड टू रीड द पोयम मोर एंड मोर। क्वेश्चन सी, डज द पोएट रियली वांट टू यू स्टॉप रीडिंग द पोयम? रियली पोएट को ऐसा लगता था कि आप पोयम रीड करना स्टॉप कर दो? आंसर, नो, द पोएट डजंट वांट द रीडर टू स्टॉप रीडिंग द पोयम। क्वेश्चन डी है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू? Answer, poet want us to tell our friends and family also to read this poem. Question ये है, what situation the following lines remind of you of? Put the poem down now and slowly back away. So ये है answer. Next question. Question 4 है, decide whether the following things are right or wrong. Give reason for your answer. थिंग्स डिसाइड करके राइट या रॉन्ग ही बताना है, उसका रीजन भी बताना है। ए क्वेश्चन, रीडिंग समवन एल्स लेटर, रॉन्ग बिकॉज इट इज देयर पर्सनल बिलोंगिंग। रीडिंग समवन ए डायरी, आंसर, रॉन्ग बिकॉज इट कंटेन्स ऑल देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। सी क्वेश्चन है, लुकिंग एट द कीबोर्ड व्हेन समवन इज ट्राइंग अ पासवर्ड, आंसर, रॉन्ग बिकॉज इट इज देयर सीक्रेट कोड एंड मेड फॉर देम ओनली। D है, eavesdropping, listening to other people's conversation without their knowledge. Answer, wrong, because these are bad manners to hear other people's conversation without their knowledge. E question, trying to get someone's address, phone number, email ID without their knowledge. Answer, wrong, it is also a crime if it is done intentionally to misuse them. Question 5 है, read the lines
given in the table, discuss what they mean and they might be used. Then use your imagination and name situation which these lines may be used by different speakers. तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है लाइन्स, सिचुएशन और स्पीकर्स। क्वेश्चन नंबर 6, add one or two lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue। शॉर्ट डायलॉग बनाने के लिए जो नीचे की लाइन जो दी गई है उनके बिफोर या आफ्टर आपको कुछ लाइंस ऐड करके वो डायलॉग प्रिपेयर कर लेना है। सो फर्स्ट है यहाँ पे इट्स ओनली मींट फॉर मी, सो ये आंसर दे दिया है। नेक्स्ट वन है दैट इजंट वेरी नाइस, सो आंसर है यहाँ पे। थर्ड वन है यू रियली हैव टू स्टॉप, सो ये है आंसर। आफ्टर दैट देयर्स ओनली वन सॉल्यूशन, सो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ऑल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज्ड इन द पोएम। कौन से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। आंसर है इट्स, दैट्स, देयर्स, एम, यू, इजंट, डोंट, यू आर, आई विल, ही विल, डोंट, poems, here's, you will, shouldn't. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।